अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो लेक्चर है वो तौहीद पर होगा इंशाल्लाह। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जो वीडियो आने वाला है वो तौहीद पर होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ जाकर देखिए, क्योंकि उसमें चैनल के बारे में, फाउंडर को फाउंडर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए। तो हम तौहीद का जो आज का वीडियो है आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो जो है वो मीनिंग ऑफ तौहीद पर रहेगा इंशाल्लाह। टाइप्स ऑफ तौहीद, कैटेगरीज ओके ऑफ तौहीद, इंपॉर्टेंस ऑफ तौहीद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। दैट्स वाई हमने पार्ट्स करके वीडियो बनाए हैं। ये पार्ट 1 है तौहीद का, जो कि है मीनिंग ऑफ तौहीद। ये वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे मीनिंग ऑफ तौहीद, कुरान की वर्सेस जो रिफ्लेक्ट करती है तौहीद को, और हदीस जो कि रिफ्लेक्ट करती है तौहीद पे। ठीक है, हम इंशाल्लाह वो सब डिस्कस करेंगे। और जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि वीडियो जो है वो हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बहुत ट्राई किया है मैं दोनों बोलूं, बट मुझसे हिंदी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए बोलने में तो प्लीज मैं माफी चाहूंगी, क्योंकि मेरी हिंदी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जितना इंग्लिश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ तौहीद की तरफ। Tawheed word comes from the word wahada, that is an Arabic verb. Okay, Arabic verb wahada means to ascribe unity to something. Means to ascribe unity to something. So Tawheed is the concept of believing something to be one. It's a verbal noun. It's a noun and a verb combined. In Arabic, we call it master. Tawheed is a verbal noun of believing something to be one. And when we use Tawheed in an Islamic way, it implies believing in the ultimate unity of Allah. Ultimate unity of Allah. Okay, and this is manifested in a number of different areas. Inshallah, we'll cover it in the next video. Um, Moving forward, this is the basic knowledge. Okay, this is the basic knowledge we all should know. This is the basic meaning also. This is the basic meaning of the Tawheed which we all should know. Okay. Moving forward to the next point, that is Surah Al-Ikhlas. Do you know how Surah Ikhlas was revealed? क्या आपको पता है सूरह इखलास जो है वो कैसे नाजिल हुई थी? The mushrikeen, they came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, asked him, O Muhammad, tell us about your God. Who is your God? जो मुशरिकीन जो लोग हैं वो अपने नबी के पास आए और कहा कि मुझे आपके रब के बारे में बताओ. Who is your God? So Allah Azza revealed this great surah Al-Ikhlas. तो अल्लाह सुब्हान व ताला ने ये जो इम्पोर्टेंट सूरा है वो नाजिल करी. ठीक है, and this is considered 1/3 of the Quran. दैट इज एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है, इसीलिए कि इसमें तौहीद है. इन दिस सूरह अल्लाह इज डिस्क्राइब विद एट्रीब्यूट्स ऑफ परफेक्शन. ओके, अल्लाह इज डिस्क्राइब विद एट्रीब्यूट्स ऑफ परफेक्शंस. सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वन इन हिज एसेंस. There is nothing like into him, and he has no wives nor son. He is Allah the One, the Prevailing. And Allah the Creator is unique in His Lordship, and that He is the one, only one that acts of worship should be devoted to. He is also unique in His beautiful names and lofty attributes. Okay, so here there is one hadith and one Quranic verse. Please pause the video and read. Okay, we'll move forward. Okay, so this Quranic verse also reflects Tawheed. In this marvelous verse, Allah describes Himself as the only one, most powerful, ever living Lord of us. Tawheed is the bedrock of Islam, and it states that it is Allah who has created the universe with whatever is in it, administers it. This is another Quranic verse which reflects Tawheed. Please read the first sentence. And your Lord has decreed that you not worship except Him.
हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप की भी नहीं. फॉर पेरेंट्स गुड ट्रीटमेंट इज कमांडेड. Okay, last but not the least, there is one hadith which is my favorite also, and which reflects Tawheed. Okay, we'll have a look inshallah. Before reading the hadith, I want to say that Tawheed is such a message which is commonly preached by every prophet from Adam alayhi salam till the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this hadith, you will see that Prophet is first inviting to Tawheed, then 5 daily prayers and zakat are as followed. Okay, I am reading the hadith. Please have a look on your screens. When the Prophet ﷺ sent Muad to Yemen, he said to him, "You are going to a nation from the people of the scriptures. So let the first thing to which you will invite them be the Tawheed of Allah. If they learn that, tell them that Allah has enjoined on them 5 prayers to be offered in one day and one night. And if they pray, tell them that Allah has enjoined on them zakat of their properties, and it is to be taken from the rich among them and given to the poor. And if they agree to that, then take from them zakat, but avoid the best property of the people." Okay, this is the hadith of Sahih al-Bukhari. So we come to the conclusion that Tawheed is the basic belief which we should follow, that will ultimately take us to Jannah. Hope this session was beneficial. If you have any questions, please put up in the comment section. Inshallah, will reply to them. We'll meet you inshallah in the next video. Till then, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Love you all for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Don't forget to subscribe and like this video. Jazakallahu khairan.